Now to our focus on the pathetic plight of patients in the district hospital in Maharashtra's Nanded district. The Bombay High Court took suo moto cognizance of the case and demanded answers from the state government. Remember, NDTV has been exposing and reporting the pathetic plight of the hospital and suffering of patients after reports of over 31 patients dying in the last 2 days unearthed. While the state government claimed there is no lack of facilities, NDTV's reporter on the ground, Pooja Bharadwaj, exposed the miserable state the hospital is in. Despair for the family of 21-year-old Anjali, who died at this government hospital at Maharashtra's Nanded just 48 hours after her baby, born alive and healthy according to the family, had died within hours of birth. The distraught family claims no senior doctor attended to Anjali, and that while the hospital has claimed that she died from blood loss, the blood the family collected for a transfusion was actually given to another patient. के साथ बहुत ही गलत हुआ मैडम। हमने उसे शनिवार को यहाँ पर एडमिट किया था मेरी बहन को, तो 1:30 बजे डिलीवरी हो गई नॉर्मल, 4 kg का बच्चा था। और सोमवार के दिन क्या बोले बच्चा डेड हो गया, बोले और बहन भी बहुत सीरियस थी। और आज बताए कि बहन चली गई तुम्हारी, बोले अचानक से बोल दिया हमको। हमारा खर्चा 35,000 आया आज तक। This latest incident adds to the multiple questions swirling around the Dr. Shankar Rao Chavan Medical College Hospital in Nanded, 607 kilometers from the state capital Mumbai, where over 30 patients died in just 48 hours, a death rate that is more than the usual for this busy government facility. An NDTV team visited the facility on Wednesday morning. तो ये आप हालत देखिए, to find shocking visuals of filth and mismanagement. Pigs roamed as relatives of patients went about their chores, some brushing their teeth, some washing utensils. Plastic bottles and wrappers clogged the drain. और जो सफाई पर यहाँ पर सवाल उठते रहे थे कल, आज हम तस्वीरों में भी आपको दिखाते हैं। आप देखें, मरीज के परिजन यहाँ पर कोई बर्तन धो रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई नहा रहा है, लेकिन उसके बीच ही आप देखें यहाँ पर सुअर किस तरह से इकट्ठा है। तो सफाई की क्या हालत है, क्या तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या यही हाल हर रोज रहता है? रोजच आहे मॅडम, रोजच आहे। आमच्या पेशंटला बघा ना काय करणार, आम्ही पोळ्यापासून हाव तर 2दा शिजर झालं, 2दा टाक्या इथून अजून पाणी निघालं, पट्टी कराय काळजी घेणार। क्या सफाई को लेके क्या काम हो रहा है यहाँ पर? सफाई को लेके क्या तकलीफ आप लोगों को हो रही है? मॅडम सगळं बाहेरच आणावं लागते, काहीच नाही यांची सुविधा। यहाँ पे आप लोग टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर कुछ रहे? भी नहीं मिल रहे, यहाँ के सब बाहर जाना, बाहर का लाना, क्या करना, गरीब लोग का कहाँ से लाना। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दवाइयाँ हैं, तो कुछ ही नहीं यहाँ पे, पूरा बाहर का लाना पड़ा, पैसे नहीं तो बच्चा मर चला। सफाई कर्मचारी है यहाँ पे? हम कैंटीन में काम करते मैडम। कैंटीन में काम करते तो आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये यहाँ पे हम करते हैं, कभी भी साफ करते हैं। आपको बोला गया अभी देखकर कि कैमरा ऑन है? हम हमेशा करते हैं यहाँ पे। अभी बताइए, ये हालत है, यहाँ पर सुअर घूम रहे हैं। नहीं मैडम, कुछ भी नहीं बोल सकते, खाली हमारा इतना एरिया, हम इतना हर रोज साफ करते हैं। इतना हम कैंटीन में काम करते हैं, हम यहाँ पे इतना रोज हम साफ सफाई करते हैं यहाँ पे। हाँ, पर ये तो गंदगी की बहुत ज्यादा दुर्गति है मैडम। दिन भर से लोग आते ना यहाँ पे, उन्होंने तो करते ही, क्या करेंगे, लोग सब आते हैं यहाँ पे। मॅडम मधात कशी ह्याची माणसाची हालत आहे, इथून धरून काहीच नाही। तुम्ही डिलिव्हरीच्या वार्डात चला, कशी हाल आहे, कशा बाया लढाल्या आता, आणि कसं कसं पेशंट अवघड आहे, कसे कसे लेकरायचे हाल आहे, कसे कसे काचा टाकलेले लेकर आहेत, ये तुम्हें इथून काय करना का। ये जो महिलाएं हैं, ये कह रही हैं अगर आप अंदर डिलीवरी वार्ड में आएंगी, उस वार्ड की हालत देखिए, आपको समझ में आएगा कि पेशेंट किस हाल से गुजर रहे हैं। आप सफाई यहाँ पे कर्मचारी हैं, क्या सफाई होती है सर? आप देखें यहाँ पे हालत, कर्मचारी कम है ना यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विट्ठल भोसले। कर्मचारी कम है, कितने किस संख्या में है यहाँ पे कर्मचारी? अब उतना तो मेरे को मालूम नहीं है, हम टेंडर पे काम करते ना।
अच्छा, हाँ, तो आप ये देखिए, ये कैंटीन में काम करती हैं, झाड़ू लेकर ये चला रही है, वो लेकिन कैंटीन में शायद करती ये आपका काम होना चाहिए ना। कि सुअर क्या हाँ। रोज रहता है। रोज रहता है तो नहीं रहना चाहिए ना। अभी उतना- अस्पताल के अंदर क्यों है? वो गंदगी फैलाने, गंदगी जो रहती ना, वो खाते ना वो गंदगी बिंदगी, इसलिए नहीं ला के लोग छोड़ेंगे। फैला रहे हाँ, हैं। तो आपको सफाई तो करनी चाहिए। कितनी संख्या में आप लोग सफाई कर्मचारी कितनी संख्या में हैं यहाँ? जो कर्मचारी है यहाँ पे, एक वार्ड नंबर 1 को 2-3 कर्मचारी ऐसा रहना चाहिए। एक कर्मचारी 2-2 वार्ड कहाँ से संभालेगा। When the NDTV team entered the hospital, this is what they saw. तो ये वार्ड नंबर 18 की आप तस्वीर देखें। एक बेड पे दो पेशेंट आप यहाँ देख सकते हैं। इस एक बेड पे 3 पेशेंट हैं। 2 to 3 patients on one bed in ward number 18 for pregnant women. One woman who could not find a bed had been squatting on the floor for the past 10 days. महिला आप देखिए जमीन पर ही यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपके लिए बेड नहीं है मैडम? इस पर है। नहीं, आप जमीन पे बैठी इसलिए आपसे बात कर रही थी। आपके लिए बेड नहीं है यहाँ पर? नहीं। ये आप अंदर शौचालय की हालत देखिए। The condition of toilets is such that even pregnant women are sometimes forced to go out of the hospital to defecate. इस वक्त मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि बदबू इतनी तेज है कि हमें यहाँ पे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। जाहिर सी बात है, वो देखकर कोई अंदर नहीं जा पाएगा। पानी नहीं है ना, वो देखो पानी भरे वाला रहता, कभी नहीं रहता। ये यहाँ बाथरूम कर जाके बाहर जाके ना संडास को जगह नहीं, बाथरूम को जगह नहीं। लेडीज क्या करेंगे? कर्मचारी, ये पेशेंट क्या करेंगे? क्या करे? ये देखो पेशेंट है, कैसा मुंह धोना है? एक बार खोल के वो पानी नहीं आ रहा है। नहीं, अभी है पानी। नहीं है, वो देखो कहाँ है, कहाँ नहीं है। नीचे गिर रहा है। हाँ। बच्चे वाला जो खाना रहता है, इधर ही फेंकते हैं। बच्चे वाला खाना इधर से फेंक दे रहे, इसके लिए अलग से डस्टबिन होना चाहिए, अलग से ये होना चाहिए। बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। क्या बोलो? ये ऐसे दिखे ना, बीमारी 100% हो जाती है। ये देखो डेंगू देख इधर ही रहे फेंका मच्छर जाता है। डस्टबिन की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं। नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं। मर जाते लोग, गरीब आदमी, बड़ा नहीं आदमी आता है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में और नांदेड़ जैसा शहर, फिर से एक बार बता दें कि 10वां सबसे बड़ा शहर है। मायने रखता है कि इस तरह से अस्पतालों की हालत, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ज़िला नहीं, आप आसपास देखें यवतमाल, परभणी, हिंगोली, तेलंगाना से मरीज यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं और बहुत बड़ा अस्पताल है। Of the total deaths under the spotlight in the last 48 hours, 16 are newborns. Very low weight premature babies need this kind of warmer machine. But shockingly, about 40 such machines are gathering dust in a corner of the hospital. राज्य के विभिन्न विभागों के चिकित्सा खरीद पर सालाना 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के खर्च का दावा है। सवाल है कि ये खर्च हो कहाँ रहा है? धूल खाते उपकरण, दवा, कर्मचारियों की भारी किल्लत और इस बीच 300 से भी ज्यादा डॉक्टरों का अचानक ट्रांसफर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। इस सरकारी अस्पताल पर सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि आसपास के अकोला, परभणी, यवतमाल, हिंगोली, तेलंगाना के भी मरीज आते हैं। वहां का भी भार है। इस सोच के साथ वो आते हैं कि मुफ्त में अच्छा इलाज हो, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। नेता कुछ भी कहें, आप तस्वीरों पर यकीन करें क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। नांदेड़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV। So to put this in a national perspective, joining us this evening, Dr. Subhash Salunke, former Director General Health Services in Maharashtra. Sir, thank you so much for joining us and patiently waiting through that report to what we have filed. How would you see the situation in Nanded? Would you see that as reflective of the state of district hospitals across the country? Or do you believe that it's a one-off case? And also put to us in perspective the number of deaths that have been reported over the last 48 hours. I think obviously whatever has been presented is based upon the facts. And as a former Director General of the Health Services of Maharashtra, definitely I am feeling highly disturbed and perturbed that this is the situation in one of the tertiary care hospital, that is the Government Medical College at the Nanded. And this is reflecting
the signs and symptoms of the health system's capacity, which is supposed to be, addressing such issues, is not addressing. This is a ground reality. But I am also sure that the amount of work that is being done across the board in the government hospitals in the state, that's also we have to take into considerations. I can assure you that if we were to compare the total number of deaths that were occurring for the infants or under 5 mortality, overall, it doesn't mean that the health system is totally defunct. Definitely, there are issues that need to be addressed. And Nanded Medical College Hospital seemed to be the worst case scenario. And obviously, there can't be any defense. And there can't be anyone saying that, okay, we are getting serious patients. Yes, you are going to get serious patients. And these patients will be referred or not admitted in the private hospitals because private hospitals charge a lot of money. Okay. So any government institution, if they take a stand that the serious patients in large numbers are being referred to us, and that's why mortality is more, unacceptable to me. Why? How are we going to be prepared? That's right. Are we not supposed to prepare ourselves for this situation? Okay. And what we are seeing about the sanitation, I mean, I'm feeling really ashamed. Okay. They should have been. As you make that point, sir, I just want to understand very quickly, this 31 deaths over the last 48 hours, the statistics is what triggered off this focus on the hospital, and then, of course, the pathetic plight of things there. Is that an acceptable statistic? Is it something that is of a reality in several district hospitals, given the volumes that they deal with? Or is there something specifically that went wrong there? Yeah, because I don't have access to the numbers as of now, but I'm pretty certain that in all the government medical college hospitals and also the district hospital, large number of serious patients are being referred. And so compared to many 5-star hospitals, there will be higher mortality. We have seen this even in the COVID. I was advisor to the government for the COVID, and we have seen in Pune, Sassoon General Hospital, similar situation was seen. But there are definitely points in favor of the health system, which is trying their best. But as has been clearly indicated, if there are 50% vacancies, and if there is no one monitoring, I'm aghast. Why nobody has gone to this hospital, medical college hospital, and seen it earlier at the senior level? And what about the public representatives who are supposed to be chairing the hospital advisory committee meeting? Why can't the honorable the MP who has punished the dean, which is absolutely deplorable, by asking the dean to clean the toilet, why that MP and his team, as a part of the hospital advisory committee, did not visit earlier? This has not happened one day. Are you saying that the dean was made a convenient scapegoat to give optics? Absolutely, I am confident and sure that the dean, let us try and understand. We have not prepared ourselves to build the capacity of our deans. Tell me which deans are trained in this entire country to manage the hospitals? They are all people who are teachers and they get promoted and become dean, and none of them are taught any management. And that is, please try and understand. This issue is not let's not address this issue superficially. How are we as a country going to build the capacity of our health system in public sector and also in the private sector? That, unfortunately, is not the priority for Government of India, nor for any state government. That's the ground reality. It's an important point that you make. You're saying that don't just punish individuals, look at it from a systemic aspect, from both finances, resources, and abilities there. Sir, thank you so much for making those important points. We're run completely out of time, but I'm sure they'll have value in the conversation that's going ahead. That's all we have time for on Left, Right, and Centre.